Let's see some questions on friction. We have a block of 5 kg and a force is acting on this block at an angle of 37 degrees. And let's say force is 20 newtons. We have been given mu as 0.4. Now remember, if they give us only one value of mu, then we take this value of mu as static as well as kinetic. For this question, your coefficient of friction between the body and the horizontal surface is 0.4. The question is, find out friction force acting on this 5 kg block. At the same time, we need to find whether this 5 kg block is moving or is at rest. Write down the question. Find out friction force. Find out friction force acting on the body and also find out if this body is moving or is at rest. Now, pause the video, try to solve it. If you cannot, come back, take the hint, and again pause the video. उसके बाद भी नहीं हो पाए, then look here. This is 5 kg body. जो forces हैं उन सारे forces को show करते हैं. Downward force, mg. This is the contact surface. That's a normal reaction, N. Because of this force, this body has a tendency to move in this direction. With respect to ground, this body has a tendency to move in this direction, and to oppose that tendency, force of friction will act in this direction. This is Fr. We need to find its value. Now, we know that whenever we have forces like this, we always resolve them. The force component in this direction, it is F cos 37. F cos 37, F is what? 20. Cos 37 is 4 by 5. This is coming 16. And force component in this direction, it will be F sine 37. F sine 37, which is F 20. Sine 37 is 3 by 5, which is 5, 4, 3, 12. Now, if you need Fr, the first thing you go for is Fr maximum. And what's the value of Fr maximum? Mu n. हम लोग Fr static maximum लिखते थे. But then, as I told you, if they give you only one value of friction, Fr static maximum is given by mu s into n. Now in this case, they have given us only one value of mu, and therefore we'll simply say Fr maximum. What is that? Mu into n. Otherwise, you know that if things are static, then static friction is self-adjusting, and maximum value of self-adjusting friction is mu Sn. Whereas when things move,
then Fr kinetic when things move is given by mu k into n. Now हमारे केस में एक ही फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है and therefore we'll use simply what? Mu. Mu पता है. We need to find what? N. Now downward force is what? 5g, which is what? 50. Upward force is what? 12. इसका मतलब है कि ये बॉडी इस ग्राउंड के साथ कांटेक्ट खत्म नहीं कर सकती. दिस फोर्स इज ओनली व्हाट? 12. हैड इट बीन 120 ये बॉडी सीधे सीधे कहां निकल जाती? वर्टिकल टेक ऑफ. फिर फ्रिक्शन का कोई मतलब नहीं रह जाता. Which means this is 12, which is less than what? 50. That means there is no vertical movement. And we need to find what? Normal reaction. अब आदमी क्या गड़बड़ करता है? लोग गड़बड़ ये करते हैं कि Fr maximum, they remember it like this. Fr maximum is mu mg. ज्यादातर केसेस में नॉर्मल रिएक्शन फ्रिक्शन के केसेस में mg आता है and therefore they just remember it like this. But it's wrong. Why wrong? Look here. On this 5 kg body, normal reaction is acting like this, 5g is acting like this, and 12 is acting like this. And there is no vertical movement, which means vertically forces should be balanced. How do you balance them? Upward force is what? N. Another upward force is what? 12. And downward force is what? 50. There is no vertical movement and therefore we have balanced vertical forces. This gives us N as 38. That's the value of N. And therefore Fr maximum mu, which is 0.4 multiplied by normal reaction, which is coming 38. This Fr maximum is coming 15.2 newtons. That's the value of Fr maximum. अब नॉर्मल रिएक्शन से क्या मिल गया अपने को? Fr maximum. कुछ लोग क्या करते हैं? Fr therefore is 15.2. No. You can see we have calculated what? Maximum value of friction which can act on this body. That's coming 15.2. We have to decide what actually friction is on this body. If you look at this body, forward force on the body is what? 16. Which means you can take this 16 as a number which says that there are 16 people who are trying to pull this 5 kg body in this direction. 16 लोगों का एक ग्रुप है और वो इस 5 kg को आगे खींचने के लिए लगे हुए हैं. Fr maximum का मतलब है 15.2 लोगों का एक ग्रुप है और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि इस 5 kg को रोक कर रखना है. It should not move. And therefore 16 you can see exceeds what? 15.2. अगर 16 15.2 से ज्यादा है, which means this body, first of all we have decided, is going to move. क्योंकि ये खींचने वाले लोग रोकने वाले लोगों से ज्यादा हैं. अगर ज्यादा हैं, अगर बॉडी क्या करेगी? मूव. तब आप बोलेंगे कि जो फ्रिक्शन है, that friction has reached its maximum value, which is coming 15.2. That's the correct answer.
look here, आपको लग रहा होगा यहाँ पर 15.2 लिखा हुआ है क्रॉस, लेकिन यहाँ 15.2 करेक्ट. When we wrote this 15.2, we did not even decide whether the body is moving or not. Before you decide value of friction, you need to go for what? You need to go for what? Whether this thing is moving or not. 16 ज़्यादा है किससे? 15.2 से. And therefore, there is no way you can keep this body at rest. If body is moving, तो जितना मैक्सिमम फ्रिक्शन है वो पूरा का पूरा यहां पर लग जाएगा. एंड दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. अब एक बार हमने फ्रिक्शन का डायरेक्शन डिसाइड कर लिया, फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड डिसाइड कर लिया, ये डिसाइड कर लिया बॉडी मूव कर रही है या नहीं. दे कैन आल्सो आस्क यू इफ इट्स मूविंग देन फाइंड आउट इट्स एक्सेलरेशन एट से a. This is also not a difficult task. How do you find acceleration? Horizontally क्या क्या forces हैं? 16 and the other is what? Fr, whose value is what? 15.2, and therefore net force on this 5 kg is coming 16 minus 15.2, which is mass 5 into acceleration a. This gives us a as 0.8 divided by 5 meters per second square. You can also find value of acceleration using this equation. Now, पूरे इक्वेशन को या फ्रिक्शन के किसी भी इक्वेशन को करने का तरीका क्या है? फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो. जितने वर्टिकल फोर्सेस हैं, जितने हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं, उन सारे फोर्सेस को दिखाओ. टेंडेंसी बॉडी के मूव करने की उसे डिसाइड करो. अगर आपको लगता है कि बॉडी आगे जाने वाली है, देन फ्रिक्शन उसको क्या करेगा? अपोज. फ्रिक्शन कितना लग रहा है इसको डिसाइड करने के लिए सबसे पहले यू विल गो फॉर व्हाट? एफ आर मैक्सिमम. एक बार हमने एफ आर मैक्सिमम डिसाइड कर लिया, रिमेंबर दैट्स नॉट द वैल्यू ऑफ एफ आर, दैट्स द वैल्यू ऑफ एफ आर मैक्स. हाउ डू यू गो फॉर एफ आर? जैसे ही आपने पता किया कि बॉडी मूव कर रही है, मूव करने का मतलब जस्ट इमेजिन फॉर द टाइम बीइंग, सपोज इंस्टेड ऑफ 16 हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आया होता 9. Just assume that everything else is what? Same, and the only horizontal component is coming what? 9. If horizontal component of force is 9 instead of 16, तो हम क्या बोलते? कितना मैक्सिमम फ्रिक्शन है इस बॉडी को रोकने के लिए? 15.2. इसको खींचने के लिए कितना फोर्स है? What is the pulling force on the body? 9. If this is 9, we know that friction is self-adjusting. If 9 is pulling, in that case we'll simply say that Fr, friction, is coming what? You'll say that friction is also what? 9. Why 9? खींचने वाले कितने हैं? 9. रोकने वाले मैक्सिमम कितने हैं? 15.2. Now take maximum friction like this, कि ये 15.2, ये जितने भी लोग हैं they're very lazy. जितने डिमांड होगी केवल उतने ही आएंगे. हमने बोला खींचने वाले लोग 9 आए हुए हैं, तो फिर इन पूरे के पूरे 15.2 को उठकर आने की जरूरत नहीं है. इसमें से केवल 9 लोग उठकर आएंगे, 9 only, and these 9 can stop this body from moving. So had it been 9, then friction for this question would be what? 9. And we'll say that in that case body is at rest. तो क्या डिसाइड किया हमने? पुलिंग फोर्स एंड मैक्सिमम फ्रिक्शन, ये डिसाइड करेंगे कि बॉडी मूव कर रही है या नहीं मूव कर रही है. Note down this example. Look at this example. We have
same 5 kg body. Mu is given as 0.4. And this time round, force of 20 newtons is pushing this body. This force. It makes an angle of 37 degrees with horizontal like this and is pushing the body. In the previous example, we were pulling the body and now we are trying to push it. As you push the body, you need to find direction of friction, magnitude of friction, whether the body is moving or not. You need to decide all those things. Again, at this stage, pause the video. Everything is same. Draw the free body diagram, draw all the forces. जिन चीजों को रिजॉल्व करना है उनको रिजॉल्व करो. जितना भी पार्ट हमने पिछले क्वेश्चन में सीखा उन सारी चीजों को यूज करने की कोशिश करो. मोस्ट प्रोबेबली आपसे एक क्वेश्चन हो जाएगा. अगर नहीं हो देन कम बैक एंड सी द सॉल्यूशन. नाउ सबसे पहली चीज 5 kg डाउनवर्ड फोर्स. डाउनवर्ड फोर्स इज व्हाट 5G. कॉन्टैक्ट सरफेस पर क्या लगेगी? नॉर्मल रिएक्शन. And then you need to resolve this F. This component is F cos 37. 20 cos 37, 4 by 5, 16. Downward component of force. Downward component of force is coming 20 sin 37. 20 sin 37 is what? 20 sin 37 is 3 by 5 and this is coming 12. Let's redraw this whole thing again. ये सारे फोर्सेस कुछ इस तरह से दिखेंगे आपको. डाउनवर्ड फोर्स कितना लग रहा है? 50. नॉर्मल रिएक्शन N. There is a force in this direction, just pushing this body, 16. This component is coming from this force, which is this. At the same time, you're pushing this body down by a force of 12. That's what is happening. First of all, we'll decide direction of friction. These are vertical forces. Body can move only horizontally, and because of this 16, body can move in this direction. It has a tendency to move in this direction. It's moving or not, we have no idea as of now. But if it will move in this direction only. It has a tendency to move in this direction because of this force. And therefore, to oppose this motion, or more correctly, relative motion, friction will act in this direction. That's the direction of friction, which is acting on this 5 kg body. Now again, there is no way it can move vertically up or down this time, because this 12 is acting what? Down. पिछली बार ये 12 ऊपर की तरफ लगा था. चांसेस नहीं थे, फिर भी अगर फोर्स ऊपर है, अगर ज्यादा फोर्स होगा, then you can lift this body off this horizontal surface. But this time around, you are pushing it down with force of 12, 120, whatever be the magnitude. There is no way you can move it in vertical direction because of this horizontal table. If there is no way you can move it vertically, तो हमने क्या बोला? vertical forces क्या हो जाएंगे? Balance. किस तरह से balance होंगे? Upward force is what? N. And this N is balancing what? 50 as well as 12. The normal reaction is coming 62. And the moment you
you find the value of normal reaction, you immediately go for FR maximum. Find out FR maximum. एक ही म्यू दे रखा है इसीलिए हमारे लिए वही स्टैटिक है वही काइनेटिक. FR maximum is coming mu n 0.4. Normal reaction is coming 62. This is coming 4 to 8, 24.8. That's value of FR maximum. Now, जो लॉजिक हमने पिछले एग्जाम्पल में यूज किया था, कितने लोग हैं जो इस बॉडी को पुश कर रहे हैं, जो इस बॉडी को मूव करना चाहते हैं? हमने बोला 16. कितने लोग हैं जो इस बॉडी को रोकना चाहते हैं? हमने बोला मैक्सिमम 24.8. And then as I told you, these are very lazy. Only those many will arrive. Those are required just to stop this body from moving. तो हमने बोला भाई 24.8 मैक्सिमम मिल जाएंगे आपको. डिमांड कितने की है आपकी? 16 अगर है तो हमने बोला ये जो फ्रिक्शन लगने वाला है, ये जो फ्रिक्शन लगने वाला है, इस फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए? फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए? एंड दैट वैल्यू इज व्हाट? 16. दैट्स द आंसर. This is 16, this is 16. Horizontal forces are balanced. That means this body is not moving and is at rest. Is at rest. Hopefully समझ में आ गया होगा क्या बनकर आया है. At the same time आपने एक चीज और नोटिस कर ली होगी, अगर किसी बॉडी को आप मूव कराना चाहते हो तो when you try to push it, it becomes difficult to move it. बॉडी मूव नहीं कर पा रही है. Whereas in the previous example, we were trying to pull this body in this direction, and we could move it. हमने उसके अंदर acceleration भी प्रोड्यूस कर दिया था, using same force, which was acting at same angle, but vertically in this direction, up. तो किसी भी बॉडी को जब आप पुश करते हो, तो उसको मूव करना डिफिकल्ट क्यों हो जाता है? When you try to push it, because of this push, you develop this vertical component. ये जो vertical component है, it increases your normal reaction. Plus पिछले एग्जाम्पल में क्या हुआ था? -15 minus. Because of this downward push, normal reaction increases, and if you increase normal reaction, FR maximum, which depends on normal reaction, that also increases. इसका मतलब इस बॉडी को रोकने वाले लोग ज्यादा हो जाते हैं, and that's the reason it's difficult to push and move a body than to pull and move it. In fact, you can write down this as a statement. With the help of previous examples, we can see that it's easier to pull and move a body than to push and move it, because when we try to push it, normal reaction increases, which increases maximum value of friction, and therefore it becomes difficult to move it. Note on this. Now look at this example.
We have a vertical surface. Block of 5 kg is being pushed against this vertical wall by a force of 100 newtons. Coefficient of friction mu is 0.8 between the vertical wall and 5 kg. Question is, we need to find Fr, friction which is acting on the body. Second part, whether this body is moving or not. The whole thing is similar to this. Let's say this is the vertical wall, that's the block, and I'm trying to push this block against this vertical wall. Now, we have no idea that situation is this or is this, which means whether the body is at rest or is coming down or is sliding down. We have to decide friction which is acting on this body and if this body is at rest or not. Again, pause the video, try to solve it and then come back. Now, होता क्या है, लोग FR maximum, they go for mu n and then they go for mu ng, creating what? Mu 0.8 and 5 G10, and therefore they use FR maximum as what? 40. But this is wrong. Which part is wrong? This part is wrong. Mu n, यहां तक सारी चीजें सही हैं, करेक्ट हैं. गड़बड़ कहां पर हुई उसको देखना. लोगों के दिमाग में अभी भी नॉर्मल रिएक्शन यहां लगता रहता है, लेकिन नहीं. नॉर्मल रिएक्शन कहां लगता है? At the contact surface. Where is the contact surface? This is the contact surface, and this is the contact surface. Then how do you apply normal reaction force? Normal to the contact surface and towards the body. That's your normal reaction force N. So this N is acting on 5 kg in this direction, and this force of 100 Newton is pushing it against the wall, vertical wall. एक force इधर से आ रहा है, एक force इधर से आ रहा है. And you can see that since it's a vertical wall, this 5 kg cannot move in this direction, which is it cannot move in this question in horizontal direction. अगर मैं इस डस्टर को इस तरह से पुश कर रहा हूं, then it can move vertically down, but there is no way you can move it horizontally. And that's the same thing happening here. Now, if you cannot move it horizontally, that gives us normal reaction. किस तरह से? ये normal reaction किसको balance करेगा? Force which is coming from this side. In this question, therefore, N is what? F, which is what? 100. This gives us what? This gives us FR maximum. What is FR maximum? Mu N. Mu 0.8, normal reaction is coming 100, FR maximum is what? 80. Up. What are the downward force? mg, that is coming 5g or 50. ये बॉडी कहाँ मूव कर सकती है? वर्टिकली. इस 50 की वजह से टेंडेंसी किधर है मूव करने की? डाउनवर्ड्स, एंड देयरफॉर फ्रिक्शन कहां लगेगा? इन दिस डायरेक्शन. दैट्स डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन. फ्रिक्शन इज गोइंग टू अपोज दिस डाउनवर्ड रिलेटिव मोशन. कहां लगा? अप. कितना? Fr. व्हाट्स द वैल्यू ऑफ Fr? इस Fr की वैल्यू कई बार लोग डायरेक्टली क्या यूज कर देते हैं? 80. नहीं. व्हाट इज 80? मैक्सिमम.
Then how do you decide FR? कितना फोर्स है जो इसे नीचे मूव कराना चाहता है? 50, जिस तरह से अपन यूज करते हैं। कितने लोग हैं जो इसे नीचे मूव करना चाहते हैं? 50। कितने लोग हैं जो रोकने के लिए हैं? 80। तो क्या इन पूरे 80 के 80 लोगों को आने की जरूरत है? हमने बोला नहीं, क्योंकि बहुत लेजी हैं। इस 80 में से केवल कितने लोग आएंगे? 80 will say no, because this 80 is what? Max. कितने लोग आएंगे? 50। क्यों आएंगे? Because you need only what? 50, and therefore FR is coming 50. If FR is 50, that means this body is not slipping down and is at rest. Hopefully समझ में आया होगा क्या किया। अब इसी चीज को, इसी वर्ड को फिर से यहां पर, suppose in the same question, if somebody increases this force from 100 to 200, if somebody increases this force from 100 to 200, everything else is what? Same. Coefficient of friction is still 0.8. So क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट्स वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द बॉडी? फिर इफ यू हैव सॉल्व दिस एंड देन दे आस्क यू दिस, फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्यों करने की जरूरत नहीं है? इट्स अबाउट फीलिंग दिस क्वेश्चन नाउ। अगर आपको दिखता है कि 100 का फोर्स लगाने पर ये डस्टर मूव नहीं कर रहा है, तो अगर मैं इस पुशिंग फोर्स को 100 से 200 कर दूंगा, so I hope you can feel it, you can visualize it, that this duster, if you cannot move it when force is 100, तो अगर आप इस 100 से ज्यादा फोर्स से पुश करोगे तब भी मूव नहीं करेगा। और अगर ये मूव नहीं करेगा, this part is clear in this question. If it's clear that this 5 kg is not going to move, after solving this, if you are given this question, then you are sure of this fact that this 5 kg is at rest. If it is at rest, what is the downward force? 50. Vertically move नहीं कर रही है, इसका मतलब डाउनवर्ड फोर्स क्या है? 50। तो फिर इस FR को भी क्या होना पड़ेगा? 50। आपको किसी FR max को निकालने की जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं थी? अगर आप निकालते तो क्या होता? That's your normal reaction, which is balancing this 200 and therefore is also 200. If somebody goes for FR max, then FR max they will write mu n. Mu is 0.8. Normal reaction is coming 200, which is coming 160. Just double of this. इस क्वेश्चन में कितने लोग थे रोकने वाले? 80। इस क्वेश्चन में कितने लोग हैं रोकने वाले? 160। आपने फ्रिक्शन नहीं बढ़ाया है, आपने क्या बढ़ा दिया है? FR मैक्स। अभी भी खींचने वाले लोग, इसको चलाने वाले लोग, डाउनवर्ड मूवमेंट क्रिएट करने वाले लोग कितने हैं? 50, and therefore this body will not move. Hopefully यहां से यहां तक का पार्ट समझ में आया होगा। बट नाउ सपोज इसी सेटअप में इन्होंने ये सिचुएशन दी होती कि हमारे पास सेम 5 kg बॉडी, इस तरफ से जो फोर्स आ रहा है, this force is only 10, 100, 200. Now let's say force is what? 10. 100 पर ये रुका हुआ था। अब आप नहीं कह सकते कि इस 10 पर ये बॉडी रुकी हुई है या नहीं रुकी हुई है। क्या करना पड़ेगा? वही कुछ, you will go for normal reaction. What's the value of normal reaction coming? Normal reaction is balancing what? F, which is 10. Then you will go for FR maximum. What is FR maximum? Mu n, which is coming 0.8 into normal reaction, which is 10, is what? 8. मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है इसको रोकने के लिए? 8. अगर मैक्सिमम फ्रिक्शन 8 है रोकने के लिए,
What is the pulling force? 50. खींचने वाले लोग कितने हैं? 50. रोकने वाले कितने हैं? 8. क्या रोक पाएंगे? से नो. अगर रोक नहीं पाएंगे, अगर रोक नहीं पाएंगे तो जो फ्रिक्शन लगेगा, अगर बॉडी रुक नहीं पाएगी तो फ्रिक्शन कहां पहुंचेगा? अपने मैक्सिमम पर. क्यों पहुंचेगा? क्योंकि पूरे के पूरे 8 भी इसको रोक नहीं पा रहे हैं. मैक्स. Again, remember, if they have given you mu kinetic, तब आप मूव करते ही FR कहां शिफ्ट कर देंगे? काइनेटिक पर. But right now, we'll say that FR is what? 8. FR is what? 8. Downward force is what? 50. This is what? 8, which means this body is now moving downwards with an acceleration of 8. And you can easily find this acceleration. How do you find this acceleration? What is downward force? 50. What is the upward force? 8. Net force is what? Mass into acceleration. Solve this and you will get the value of acceleration. किस तरह से क्वेश्चंस को हैंडल करना है, ये चीज समझ में आ गई होगी ना. इस क्वेश्चन के अंदर आपका एक होमवर्क है. हमने देखा कि 100 पर बॉडी क्या थी? रेस्ट पर. 200 पर भी बॉडी किस पर है? रेस्ट पर. जब 10 पर लगाया तब बॉडी क्या कर रही थी? 10 पर बॉडी इज मूविंग. क्वेश्चन इज दैट what is the minimum force you should apply so that this body doesn't move? Write down this homework question. Find out minimum force which should be applied on 5 kg block so that it does not move. Minimum means 100 पर रेस्ट पर था, थोड़ी देर के लिए बोला 95 पर रेस्ट पर है, 91 रेस्ट पर है, लेकिन जैसे ही 90 गया ये स्लिप कर गया. वी आर लुकिंग फॉर दिस 90. नाउ व्हाट 90 इज अपने को नहीं पता. किस तरह से करेंगे? सोचना. सारा का सारा मेथड बोर्ड पर आपके सामने है. नोट डाउन दिस मच. Now look at this example. We have a 10 kg block and on its side vertical face, we have a 5 kg block. There is no friction between 10 kg and ground, but friction is present between 10 kg and 5 kg. Let's say this mu is 0.4. Between 10 and ground there is no friction. Between 5 and 10, coefficient of friction is what? 0.4. यहाँ से एक force आया and this force is of 30 newtons. This force is 30. Question is find out friction force between 10 kg and 5 kg. Write down the question. Find out friction force between 10 kg and 5 kg. And also find out accelerations of 10 kg block and 5 kg block. Accelerations of 10 kg block and 5 kg block.
Now, फिर से pause the video, try to solve this question. Simple से hint, draw free body diagrams of both bodies. Go for FR maximum. किसी भी फ्रिक्शन के क्वेश्चन को करना है यही करना है आपने. फ्री बॉडी डायग्राम, गो फॉर FR मैक्सिमम. FR मैक्सिमम कहाँ? कॉन्टैक्ट सरफेस पर. That's a contact surface. Pause the video, try to solve this question and then come back and see the solution. Now, ये जो 10 and 5 है, यहाँ पर इस 10 kg का अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो वो इस तरह का बनेगा. 10, force of 30 is coming from this side. Downward force is 10G. Although we do not need it, क्योंकि यहाँ पर कोई friction नहीं है, फिर भी a normal reaction N dash, because we are not interested in it, N dash. This 5 is going to push this 10 kg in this direction. That's a contact surface. Contact surface. Normal to the contact surface towards the body. Normal reaction. For 5 kg, same normal reaction is acting in this direction. Downward force of 5G. Now everybody can feel that because of this 5G, this body has a tendency to move, to slide downwards. And to oppose this downward movement, इस पर ऊपर की तरफ क्या लगेगा? FR. तो यहाँ चीजों को सीखना. कौन है जिसने इस 5 kg पर ये FR लगाया? 10. This 10 kg is exerting FR on this 5 kg in this direction. That means this is the action force. अगर ये action है तो इसका reaction कहाँ लगेगा? On 10 kg. इसलिए इस 10 kg पर you will see a downward friction force like this, FR. Action, reaction. अगर यहाँ friction present होता, तब अपने को इसकी और इसकी दोनों की जरूरत पड़ती. अभी we have given that there is no friction between 10 and ground, and therefore you don't have to worry about this, at least for 10 kg. Now, अब पहली चीज, ये जो 5 kg है, इस 5 kg के लिए अपने को इतना नहीं पता कि ये स्लिप कर रहा है या नहीं कर रहा. उसको डिसाइड करने का तरीका है FR मैक्सिमम फाइंड करना. FR मैक्सिमम डिसाइड करने का तरीका है नॉर्मल रिएक्शन के पास पहुंचना. हमने बोला ठीक, लेट्स गो फॉर FR मैक्सिमम. What is FR maximum? FR maximum is mu n. Mu is given in the question, 0.4, normal reaction. We need to find this normal reaction. How do you find this normal reaction? ये 5 kg अगर स्लिप करे या नहीं करे, अपने को इतना पता है कि ये स्लिप करे या नहीं करे, इसका horizontal acceleration, if horizontal acceleration of 10 kg is a, then 5 kg, its horizontal acceleration is also what? A. We have no idea whether 5 kg is slipping down or not, but we know that along with 10 kg, it is moving horizontally with same acceleration. Look here. हो सकता है situation ये हो, that's 10 kg, this is 5 kg. हो सकता है situation ये हो, they both are moving only horizontally. There is no vertical movement. In that case, you will say that they both have same acceleration. लेकिन chances ये भी हैं कि इस तरह से हो रही है वो situation. They're moving forward, are moving forward, at the same time 5 kg is coming down. Even in that situation, it starts from this top and then you found it at the bottom.
Even in this situation, horizontal acceleration is what? Same. And therefore अपने को इतना पक्का हो गया कि अगर ये ए से मूव करेगा तो 5 भी ए से मूव करेगा हॉरिजॉन्टली। और व्हाट वर्टिकल पता नहीं, वो डिसाइड किससे होगा? एफ आर मैक्स से। अब मोमेंट यू से कि आपने ए और ए डिसाइड कर लिया, लेट्स गो फॉर ए फॉर 10 kg। 10 kg के लिए दिस फोर्स इज व्हाट? 30, दिस फोर्स इज व्हाट? n। व्हाट इज द इक्वेशन? 30 minus n is what? Mass into acceleration। 30 minus n for 5 kg। इसके पास भी कितना acceleration है? a। what is the force? n। ये नहीं है। this F is acting on what? 10। इस 5 kg पर कितना force है? n। किस तरफ? this side। what is the acceleration? a। and therefore n equals to what? 5। अब you can solve this। इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे, आपको क्या मिल जाएगा? a मिल जाएगा। a मिल जाएगा, उससे क्या मिल जाएगा? नॉर्मल रिएक्शन। अपने को क्या चीज सीखनी है उसको देखना। Even if 5 kg slides down, we know that 10 kg and 5 kg, their horizontal accelerations are what? Same. If their horizontal accelerations are same, then we can use this fact as if this whole thing is of 15 kg, 10 plus 5, and a force of 30 newtons is pushing this 15 kg block. Whatever is happening at this level, in horizontal direction is internal now. Action, reaction. If you draw 15 kg, 10 and 5 together, then this normal reaction which takes place at this position, at this contact surface, becomes internal। internal की अपने को जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए हम क्या कर सकते थे? कितना फोर्स है भाई? 30। what is the mass? 15। what is the acceleration in the body? a। 30 equals to 15a। वही चीज यहां लिखी हुई है। if you add these equations, n and n cancel, you get what? 30 equals to 15a। इसका मतलब even without drawing this free body diagram, आप बता सकते थे इसका horizontal acceleration कितना है। अपने पास horizontal acceleration निकल कर आ गया, कितना है? 2 meters per second square। एक बार ए मालूम चल गया, ए से तुरंत क्या मिल जाएगा अपने को? नॉर्मल रिएक्शन। इसका मतलब जो नॉर्मल रिएक्शन है उस नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या आ रही है? 5 into 2 which is what? 10। we found a, put this value of a in this equation, you got the value of n। once you got the value of n, 0.4 into 10 is what? 4। what is 4? FR maximum। now यहां पर कितना है डाउनवर्ड फोर्स? 50। कितने मैक्सिमम है? FR नहीं, कितने मैक्सिमम है जो रोक सकते हैं? 4। कितने हैं जो इसको नीचे की तरफ खींच रहे हैं? 50। which means there is no way you can keep this 5 kg body vertically at rest। ये पक्के से नीचे की तरफ आएगा with what acceleration? b। इस 5 के पास horizontal भी है, and since maximum of this FR is only 4, there is no way you can stop it vertically। horizontally तो मूव कर ही रहा है, vertically भी मूव करेगा with what acceleration? b। हमने ये डिसाइड कर लिया। एक बार हमने ये डिसाइड किया, then we can easily say what? if it is moving, then FR ये अपने कहां पहुंचेगा? मैक्सिमम पर। what is that? 4। कैसे डिसाइड किया? पता है, खींचने वाले ज्यादा हैं, रोकने वाले कम हैं। ये सारे के सारे रोकने वाले आ गए हैं, तब भी नहीं रोक पाएंगे।
and therefore FR is what? 4. This is 50. How do you decide B? What is downward force? 50 minus 4 is what? Mass into acceleration, which is what? B. This gives you B as 46 upon 5 meters per second square. Now, क्वेश्चन ने क्या पूछा था अपने से? क्वेश्चन में पूछा गया था फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ 10 kg. What is acceleration of 10 kg? Acceleration of 10 kg is only what? A. What's the value of A? पता है अपने को. Question is done. Then question says find out acceleration of 5 kg. Now 5 kg is having two accelerations, one horizontal, other one what? Vertical. अगर दो acceleration हैं, एक horizontal, एक vertical, तो आपको पता है जो resultant होगा that will be in this direction. What is that resultant? That resultant is root over a square plus b square. तो ये जो एक्सेलरेशन है, that's your acceleration 5k. होपफुली समझ में आया होगा किस तरह से इन क्वेश्चंस को आप हैंडल कर सकते हो. नाउ इसी क्वेश्चन का एक सिंपल सा ऑब्जेक्टिव प्रोफाइल देखना. वेरी इजी ऑब्जेक्टिव प्रोफाइल. इतना सब देखने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि आप इस तरह के क्वेश्चंस को किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में डर कर छोड़ दो. एवरीथिंग एल्स इज सेम, म्यू 0, म्यू 0.4 and all. What they gave us is that a force is acting on this 10 kg block. There is no friction at this place. Right here, coefficient of friction is 0.4. And question says that a force is acting such that 5 kg is not slipping down. Write down the question. A force is acting on the system such that 5 kg is not slipping down. Then find out friction force. Acting on the 5 kg block. Then find out friction force acting on the 5 kg block. Now, this is the easy question, which I said can be asked in any objective examination. And then थोड़ा सा level उठाने के लिए write down the second part of the question. Find out minimum force F for which 5 kg does not slide vertically. जब 30 था तो 5 kg is coming down. Question says, what is the minimum you should apply? तुमने देखा 30 पर नीचे आ रहा है, 40 पर नीचे आ रहा है. Suppose 48 पर नीचे आना रुक गया. We are looking for that 48. That's the minimum. But now the first part, कितना easy है first part, उसके बाद चलते हैं. क्या है first part अपना? A force F is acting on this system such that 5 kg is not moving vertically. Find out Fr. अगर केवल इतना क्वेश्चन दिया गया
then I can assure you that this question should take just 5 seconds. तो जो लोग अभी तक नहीं सोच पाए क्या आंसर है, आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है. You can pause the video, think about it. I said you can answer this question in 5 seconds. लेकिन अगर आपको 2 मिनट भी लगे, take your time. But 5 seconds means it's very easy to answer this first part. फिर से क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है F इस तरह से लगाया है अपन ने that 5 kg is not sliding vertically. Then what's the value of friction? क्या करना था? इतना करना था. What is the downward force? 5g. इस 5g की वजह से 5 कहाँ आना चाहेगा? नीचे. अगर ये नीचे आना चाहेगा तो ऊपर क्या लगेगा? Fr. इसको रोकने के लिए. क्या ये नीचे आ रहा है? क्वेश्चन बोलता है नहीं. अगर नहीं आ रहा है, then what's the value of Fr? 5g. आंसर. केवल इतना करना. किसी फ्री बॉडी डायग्राम को बनाने की जरूरत नहीं, कोई आपको नॉर्मल रिएक्शन एंड ऑल फाइंड करने की जरूरत नहीं. अगर क्वेश्चन इतना इजी दिया होता कि फोर्स ऐसा लग रहा है कि ये 5 नीचे मूव नहीं कर रहा है, देन केवल इतने से सोचने से क्वेश्चन हो गया. 5 kg is not at rest. ये मूव कर रहा है horizontally, लेकिन vertically there is no movement. To stop vertical movement, friction should balance out this 5g. That's the answer. अब इस क्वेश्चन के थ्रू हम ये मिनिमम एफ फाइंड करने की टेक्निक इसको भी सीखते हैं. अपने से पूछा गया है फाइंड आउट मिनिमम एफ so that you can stop 5 kg from sliding down. क्या किया हमने देखना. Let's remove these extra things first. This is extra because there is no vertical acceleration. Again, जिन लोगों को लगता है कि वो इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं, पॉज करना वीडियो, गो फॉर इट, थिंक अबाउट इट, हो जाएगा आपसे. जिन लोगों को लगता है कि नहीं, well, then see the whole thing. Let's erase each and everything. इससे ये पूरी कहानी आप एक बार और अच्छे से समझ सकें. Now, question says that 5 kg is not coming down. If 5 kg is not coming down, then the situation is like this. We have no idea of this force. We are saying that this force is what? Is the minimum force. Let's also erase this. Let's redraw the whole thing. जैसे ही आपसे बोला गया कि हमारे इस पूरे ब्लॉक सिस्टम पर this is 10, this is 5, a force F minimum is acting on this 10 kg, and for this 10 kg जिसका डाउनवर्ड मूवमेंट था, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन भी, that has become what? 0. We are interested in F minimum. आपको पता है that this thing is going to move horizontally with A, this thing is also going to move horizontally with A. इस बार पक्के से अपने को पता है कि ये चीज ऐसी दिखने वाली है. A block of 15 kg which is being pushed by this force F minimum. Whatever is happening at this level is internal, क्योंकि पक्का है कि ये नीचे नहीं जाएगा, ये आगे की तरफ जाएगा. कोई आदमी दूर से अगर देखेगा उसको लगेगा इस तरह की शेप मूव कर रही है, and on this shape there is only one
external horizontal force which is what F minimum. और इस F minimum की वजह से पूरा बॉडी इधर जा रही है किससे A से. और you write the equation force is what mass into acceleration. मतलब क्या, अगर आपने A पता कर लिया क्वेश्चन सॉल्व हो गया. अगर ये पता कर लिया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया. अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा यहां देखना. ये जो 5 kg था, इस 5 kg का जो फ्री बॉडी डायग्राम था उसको देखते हैं फिर से. 5 kg पर इस तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन लग रही है. 5 kg पर इस तरफ फ्रिक्शन लग रहा है Fr. 5 kg is moving in this direction with acceleration A. 5 kg. केवल 5 kg के लिए अगर हॉरिजॉन्टल इक्वेशन आप लिखते तो वो क्या बनती? नॉर्मल रिएक्शन मास इनटू एक्सेलरेशन n 5a. पूरे पर F मिनिमम है. केवल 10 को देखेंगे फ्रॉम दिस साइड इज F मिनिमम. लेकिन अगर आपने 5 को अलग से ड्रॉ कर रखा है तो 5 at this contact surface is experiencing this force n only. What is n? 5a. अगर n पता है तो सबसे पहला काम क्या करते हैं n के बाद? Fr maximum. What is Fr maximum? Mu n. Mu was 0.4. Normal reaction is 5a. We have no idea of a so far. This is coming 2a. Fr max is coming what? 2a. Fr max, ये जो Fr है इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है? 2a. बट यहां देखना, ये जो 5 है, इस 5 पर there is a downward force. What is this downward force? Fg. 5g. लेकिन ये 5 क्वेश्चन बोल रहा है that is not moving vertically. अगर ये वर्टिकली मूव नहीं कर रहा है तो इस फ्रिक्शन को किसको बैलेंस करना होगा? 5g. सेम आर्ग्यूमेंट. अपने को पता है कि फ्रिक्शन कितना लग रहा है? 50. फ्रिक्शन कितना लग रहा है? 50. अब लॉजिक किस तरह से डेवलप होना है उसकी तरफ चलते हैं. सपोज हमने इस पूरे पार्ट पर इतना फोर्स लगाया हुआ था that this Fr max, just assume that Fr max was coming 60. Fr max was coming 60. Suppose Fr maximum जो भी था कितना निकल कर आ रहा था? 60. आपने फोर्स ऐसा लगाया हुआ था. कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है. 60 का मतलब A should be what? 30. A should be 30 and 5. You can find that F जिसने 60 का Fr max प्रोड्यूस किया होगा. लेकिन अभी जस्ट न्यूमेरिकल वैल्यूज के थ्रू समझते हैं. तो let's look at these numbers. Suppose this Fr max was 60. अभी इनको इरेज कर देंगे अपन समझने के बाद. किसी F के लिए 60 था. Fr क्या होगा? यही होगा. क्यों होगा? क्योंकि आपने बोला हुआ है 5 kg मूव नहीं कर रहा है. अच्छा, फिर उन्होंने बोला कि अगर Fr max 60 है तो Fr कितना है? आपने बोला यहां देखने का मतलब ही नहीं है. 5 kg वर्टिकली रेस्ट पर है, Fr यही होगा. इसका मतलब ये हो गया कि आपने बहुत ज्यादा फोर्स लगा दिया था और उस ज्यादा फोर्स की वजह से Fr max भी ज्यादा हो गया था. आपने बोला इस Fr max को कम करो, कम फोर्स लगाओ, कम फोर्स ट्रांसफर होगा which is called n. कम फोर्स ट्रांसफर होगा, Fr maximum ये भी कम हो जाएगा. तो सपोज 60 की जगह आपने फोर्स इस तरह से लगाया that Fr max was coming what? 51. इसका मतलब क्या? कितने लोग हैं रोकने वाले? 51. खींचने वाले कितने हैं? 50.
तो फिर 51 में से केवल कितने आएंगे? 50। बॉडी क्या है? रुक जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि आपने एक्स्ट्रा फोर्स लगा रखा है। हमने बोला नहीं। सपोज एफ आर मैक्स कितना होता? 50, विच मीन्स व्हाट? कितने लोग हैं खींचने वाले? 50। अगर आप रोकना चाहते हैं तो कितने चाहिए? 50। मिलने वाले कितने हैं आपको? 50। दैट मीन्स दिस थिंग इज व्हाट? अबाउट टू मूव vertically. ATM, this 5 kg is about to slide down vertically against this vertical face. About to move. थोड़ी देर के लिए इसके बाद की सिचुएशन को विजुलाइज करते हैं। आपने फोर्स को और भी कम कर दिया। जिस जगह पर 50 आया था आपने उससे भी क्या कर दिया? फोर्स को कम कर दिया। अगर आपने फोर्स को कम किया और ये 50 की जगह हो गया 49, which means what? FR maximum is now what? 49. 49 लोग हैं जो रोक सकते हैं। खींचने वाले कितने हैं? 50। रोकने वाले कितने हैं? 49। क्या रोक पाएंगे? नहीं। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दिस थिंग शुड नॉट मूव। इसका मतलब है हम इस 49 में इंटरेस्टेड नहीं है। विच मीन्स जब भी इस तरह की सिचुएशन आती है, किस तरह की? क्वेश्चन अगर ये बोले find out minimum so that this thing does not slip. Minimum so that this thing does not slip. इसका मतलब है यहां पर relative motion just होने वाला है। About to move. This body is about to move. और जब भी about to आपको फील होगा, जब भी फ्रिक्शन कहां पहुंचेगा? अपने मैक्सिमम पर। फ्रिक्शन कहां पहुंचेगा? अपने मैक्सिमम पर। विच मीन्स हमारी बॉडी एफ आर मैक्सिमम कितना दे रही है? 50। लेकिन एफ आर मैक्सिमम कितना था? 2a। एफ आर मैक्सिमम इज व्हाट? 50। कब? मिनिमम। But FR maximum is what? 2a. 2a. What's the value of a coming? 25. a कहां पुट करना था? यहां पर। क्या फाइंड करना था? मिनिमम। What is minimum? 15 into 25. That's the minimum force which is acting on this body. And then only you can stop 5 kg from sliding down. अच्छा क्वेश्चन है। इसके इस पार्ट को समझने की कोशिश करना। I'll just repeat this part only. इस मिनिमम फोर्स से अगर आप ज्यादा लगाओगे तब भी ये मूव नहीं करेगा वर्टिकली। अगर ये मूव नहीं करेगा फ्रिक्शन क्या बना रहेगा? 50। सेम आर्ग्यूमेंट विच वी यूज इन दिस पार्ट। बट अगर किसी ने मिनिमम से कम लगाया, एफ आर मैक्सिमम डिक्रीज हो जाएगा। इसे खींचने वाले 50 हैं, अगर रोकने वाले 49 हैं तो फिर आप इसे रोक नहीं सकते। ये बॉडी क्या कर जाएगी? मूव। लेकिन क्वेश्चन क्या बोलता है? फाइंड आउट मिनिमम फोर्स सो दैट यू कैन जस्ट स्टॉप दिस 5 kg फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन। तो अपने बोला एक काम करते हैं, इतना लगाते हैं कि यहां का फ्रिक्शन जस्ट इस 5 kg को संभाल रहा हो। इसका मतलब फ्रिक्शन जो यहां था, जितने भी फ्रिक्शन वाले लोग थे वो सारे के सारे इस 5 kg को रोकने में यूज हो जाएं। Put on this.